फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट नेक्स्ट। और शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की बदौलत इंडिया ने ये सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान क्लिंच कर ली है। वी हैव वन द सेकंड गेम बाय मार्जिन ऑफ 6 विकेट्स और 2-0 का लीड ले लिया है। वेल, टू टॉक मोर अबाउट दिस आई हैव विद मी जेमी ऑल्टर, चेतन नरोला एंड ताऊ सरस्वी जॉइनिंग इन दिस लाइव सेशन। जेमी, Yashasvi Jaiswal is back and back with a bang. What a knock. What a brilliant knock. Absolutely. I mean, we've seen this. I mean, he's come खेले देश के लिए, but the numbers are pretty good. And this is what you get. I mean, when you pick youngsters who really don't give an F about life, more often than not, you're going to get guys with 200 strike rates. So lovely to watch him. Yes, one of the smallest boundaries in India, one of the weakest bowling attacks going around, but you have to do a job, and really amazing to see what Jaiswal did. Fantastic. Yeah. Taus bhai, what is your take on Jaiswal's knock? I mean, just brilliant. Thoroughly top. ठीक है, सारी चीजें हम फैक्टर इन जरूर करेंगे कि छोटी बाउंड्री सी, रिलेटिवली एक वीकर बॉलिंग अटैक है, बट अगेन दैट काइंड ऑफ अ नॉक, दैट डोमिनेंस, कॉन्फिडेंस वो दिखता है। एब्सोल्युटली। इंदौर तो नाम जाना ही जाता है यार। समंदर सिंह चौहान इज द क्यूरेटर। वहां पर डबल 100 भी आ चुका है भाई, वहां पर वीरेंद्र सहवाग का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये कुछ नई बात नहीं है कि लिमिटेड ओवर्स में आपको बाइटिंग विकेट्स मिलेंगी, बट देन आई मीन यंगस्टर्स प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट एंड देन द प्रेशर ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट दैट क्राउड, अमेजिंग नॉक यार, क्या ब्यूटीफुल। यशस्वी जायसवाल एज एक्सपेक्टेड, आई मीन ही हैज बीन ऑफ फॉर्म, ठीक है, होता है, बट देन दिस यंगस्टर नोज हाउ टू बाउंस बैक। और उन्होंने वो सवाल का भी जवाब दे दिया जो कह रहे थे नंबर 3 पे बैटिंग करना चाहिए या बाहर कर देना चाहिए, जो हमारी पहले मैच के पहले बात हुई थी। तो भाई अब वो जो व्यूअर है हमारे, वो जवाब देते उसका वो खुद ही सामने से कि उनको ड्रॉप करना चाहिए कि विराट कोहली को क्या। बट देन यार शिवम दुबे यार, व्हाट अ प्लेयर। मैं एक बात बताऊं, शिवम दुबे की बताना चाहता हूँ। When I was working in my previous newspaper, जहाँ तो मेरा रूटीन हुआ करता था सुबह में बल्लेबाजी करना जाके, रात में 12-1 बजे के बाद छूटने के बाद अर्ली मॉर्निंग उठ के जाता था मैं इंडियन एयरलाइंस ग्राउंड पे, वहां पर बैटिंग करता था क्योंकि मेरी बैटिंग बड़ी वीक थी। 27-28 साल की उम्र थी, रॉन्ग एज टू लर्न बैटिंग। बॉलिंग किया करता था, बट दैट वाज रॉन्ग एज। तगड़ा बैटिंग कर रहा हूँ, मस्त बैटिंग कर रहा हूँ, बट एक बंदा वहां पर अकेला सुबह सुबह दौड़ता हुआ नजर आ रहा है पूरा ग्राउंड पे और नॉन स्टॉप भाग रहा है बंदा। फिर वो बंदा जाके थ्रो डाउन ले रहा है, थ्रो डाउन में लंबे लंबे शॉट्स मार रहा है। वो लंबे लंबे शॉट कभी इधर गिर रहे कभी उधर गिर रहा है। एयर इंडिया ग्राउंड सांता क्रूज में खूबसूरत ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है। वो मतलब थ्रो डाउन कैसा ग्राउंड शॉट नहीं हो रहा है, बंदा लंबा मार रहा है। वो हम सर बचा रहे हैं, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सर बचा रहे हैं। तो भाई पूछे भाई कौन है ये बंदा यार, क्या ही है, मतलब he did not even play for Mumbai at that time, like 27 में था, मैं अभी 40 साल का हूँ, this is like 14-15। तो अगले दिन इंट्रोड्यूस करा, आई मीन ऑब्वियसली आई एम अ जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट को देख के भाई ही शिवम दुबे, he was with his father, with his coach, his father is a big support system of this guy, हाँ। तो शिवम दुबे यार, ये बंदा मुंबई क्रिकेटर होके जो ग्राउंड शॉट्स खेलना चाहिए, जो वीए में खेलना, ये सारा ऊपर मार रहा है। आज जाके मालूम पड़ा कि यार वो ऊपर मारने का बदला, मतलब नतीजा ये है। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी इनकी भाई साहब की, बट देन आपको पेशेंस, आपको वो टैलेंट नर्चर करना है, वो आइडेंटिफाई करना है, जो धोनी ने करके दिया आज वो यहाँ पर नहीं तो पहले बाहर हो गए थे। गेम समझ गए। तो अब ये हमारे पास फिनिशर मिल गया है, सिर्फ छक्के में डील करेगा, चौका छोड़ दो नहीं मिला तो, बट छक्के में आपको मैच जिताएगा। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल नॉक फ्रॉम दिस गाय एज वेल एज यशस्वी जायसवाल, बोथ मुंबई गाइस, एंड आई एम वेरी हैप्पी यार, मजा आ गया देखकर। Shivam bhai, what do you have to say about the two knocks, specifically Shivam Dube's, back-to-back 50s, back-to-back 60+ scores, under pressure नहीं कहूँगा ये वाला, but again, बहुत clean hitting था, clean striking था आज, and especially वो नाबी के ओवर में। Yeah, I mean,
it's a batting paradise of a pitch. तो आप इस पे expect करोगे such sort of a big hitting. छोटा ग्राउंड भी है तो बाउंड्रीज भी अच्छे लगते हैं, सिक्सेस जो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स पे जो आपको चौके दिखेंगे यहाँ पे अट्ठे लगते हैं, छक्के भी नहीं अट्ठे लगते हैं यहाँ पे। तो शिवम दुबे, आई मीन जेमी ने इतनी बार कहा है, मैंने इतनी बार कहा है, आई थिंक ताउज ने भी कहा है, सीएसके के साथ खेल के, एमएस धोनी के साथ खेल के जो एक कोचिंग क्लिनिक मिलता है ना आपको, that's a turning point for a lot of cricketers, और ये especially in the T20 format. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि MS Dhoni is a magician, actually he is a magician, but मतलब कि overall game निखरेगा आपका ODI में या टेस्ट में, वो that's a different story altogether. लेकिन T20 cricket में a lot of players improve their skills और realize their skills, उनको realization होता है कि आपकी strengths क्या हैं. And I think Shivam Dube is one of those players, he's in that Dhoni school of players. उनको realize हो गया है कि हाँ, T20 क्रिकेट में नंबर 4 या नंबर 5 पर आके मेरा एक ही काम है, बॉलर्स को टांग देना, बस। मतलब उनकी जो रीच है, बिग गाय, उनकी जो रीच है, उसका वो रीच का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड उनको बोल दिया गया है कि बॉस, यू जस्ट गो एंड यू हिट, एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। आई मीन चौके लग जाए गलती से तो ठीक है, नहीं तो छक्के से ही काम चलाते हैं वो। सो आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट टू वॉच। यशस्वी जायसवाल, वेल आई एम इन लव विद यशस्वी जायसवाल। ही इज माय फेवरेट यंग बैटर एट द मोमेंट। मैंने बहुत सारे बार कहा है कि अगले 10 साल के लिए हमें मिल गया है एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर। I would want to see improvements in his overseas batting, but अभी एक ही tour हुआ है, so I'm not going, and the pitches in South Africa were not really conducive to batting, so I'm not going to judge. I think West Indies में he showed good application, but again वहाँ पे bowling attack was a little lightweight, so I'm not going to judge too early. But I believe he's an all-format batter for us. The next, okay, 10 years is a long time nowadays. Like in 5 to 7 years, आप ले लो. I admire Yashasvi Jaiswal. I love watching him bat. And I think he has something special. But just digressing a bit, चेतन भाई, क्योंकि आपने 10 साल की बात करी या एक prolonged career की बात करी, do you think यहाँ पे कहीं ना कहीं जायसवाल का जैसा जो कैलिबर है, उसको टीम मैनेजमेंट को भी उसके वर्कलोड को कहीं ना कहीं आगे जाके मैनेज करना पड़ेगा टू सस्टेन दैट फ्री फॉर्मेट? यार अभी वो कितना खेल लिया जो आप उसका वर्कलोड मैनेज कर रहे हो, so no, I think if I'm Yashasvi Jaiswal, I want to play every match right now. Yeah. Simple. Yeah. You are in that stage of your career. आप खेलो अगले 5 साल तक, हर मैच खेलो। अगर अभी आपको वर्कलोड मैनेज करना पड़ जाएगा तो फिर उसका करियर खत्म है 5 साल में। वर्कलोड मैनेजमेंट शुरू होता है जब आप 30 के पास पहुंचते हो या आपकी इंजरीज हो जाती हैं, जैसे श्रेयस अय्यर इज इंजरी रिडन और हार्दिक पांड्या हु इज इंजरी रिडन, Yashasvi Jaiswal is too young. I think he's fit. He should work on his fitness. He has somebody like a Virat Kohli to look up to in terms of fitness and batting. Rohit Sharma is also his partner in a couple of formats. Yeah, I think he has a lot to learn from those two greats. Rahul Dravid hai batting. He's the coach. He bats with Joss Butler. I think जो major improvement दिखी है, that has been because of the way he's batted with Joss Butler. He bats like Joss Butler now. He picks his moment. अपना moment देख के मारते हैं यार वो. I think that is the most remarkable thing that has evolved in his batting over the last 2 years. जो जितना मैंने देखा है, कि वो अपना moment pick करना सीख गया है बंदा. And when a player of his caliber, he realizes कि मेरा ये moment है, इसमें मुझे attack करना है. They become unstoppable. So I don't agree with the workload management bit. I think अगले 5 साल हर मैच खेलो बॉस. As long as you're injury free, हर मैच खेलो. He should be hungry to play every match. True. Okay. Talking about Shivam Dube again, I have a question here. Questions हम बाद में लेते हैं, Jamie, but I would take that because I am tempted to take this question. Would you be tempted to put Dube in World Cup squad or just keep him in reserve in case Hardik gets injured? Jimmy, what's your thought about this? Look, it's a tempting one, but I think bowling wise, again, I mean, पहला मैच में 2 ओवर 9 रन डाले, आज 3 ओवर 36 रन. It just goes. I was showing the numbers of why he's not been given the ball that often, and this was the example. एक मैच में 2 ओवर डाले,
हम सब शुरू हो गए, अरे मिल गया. Today was the reality is he's more of a 12 run per over bowler. It's a fact. तो अभी unfortunately क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर्ड है तो हम उसके नाम जोड़ रहे हैं, but he's no Hardik Pandya. Hardik Pandya is a million times better. But yes, if he keeps batting and bowling, he's a good option to keep in the reserve. वो इस tournament, इस series के man of the tournament तो रहेंगे. But to my mind, it's not enough to have him in World Cup discussions right now. No. Okay. Despite of that clean striking of the ball, he's a backup of a backup, so he's going to have to wait, unfortunately. Yeah, ताउस भाई. Absolutely, जगह तो मुश्किल रहेगी मगर यार I am tempted to have him because देखो again I am not taking him as a bowler at all. आप जगह कितना बढ़ाएंगे, 15 को 16 करेंगे या 17, वो तो कर ही नहीं सकते क्योंकि स्पेसिफिक 15 का रहता है कि वर्ल्ड कप में आप खिला सकते हो उतना. बट शिवम दुबे टेम्पटेड है. बॉलिंग का तो हमने पहले ही बात किया था भाई, बहुत लैग कर रहे, पेस ही लैग कर रहा है और आज विकेट भी वैसी थी. और कितने चलेंगे यार, फास्ट बॉलर्स नहीं चलती, मतलब ये ऐसी विकेट पे तो नहीं चलेंगे. वहां पर स्पिनर्स के सामने दिस गाय इज अ हिट बिकॉज ही इज गॉट टाइम, ही इज गॉट दैट स्ट्रेच कर सकते हैं लंबा, ही इज गॉट द स्किल्स टू प्ले स्पिनर्स. तो धोनी भी इनको स्पिनर्स के सामने ज्यादा यूज करते हैं. अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे हार्दिक आ गया तो दैट इज अ गुड न्यूज, बट देन अगेन यू हैव टू एडजस्ट इन समवेयर. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हार्दिक का बैकअप या कहीं ना, क्योंकि दिस गाय इज अ मैच विनर. ये मैच जिता के देंगे आपको, कहीं से भी किधर से भी लाके आपको मैच जिता के देंगे. आपको एबिलिटी है, अभी प्रूव नहीं, क्योंकि आपको अभी बैटिंग फर्स्ट भी करना चेज में तो किए, और ये अफगानिस्तान है बिना राशिद खान के, तो अभी सफर लंबा है. वो आईपीएल में क्या करेंगे वो उससे पता चलेगा. बट देन he's got the ability, he's got the skills. वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स खेलेंगे, स्पिनर्स चलेंगे और लॉन्ग रीच चाहिए आपको लंबे मैच घुमाना है तो दिस गाय आई मीन अधिक से बेटर सिक्सेस मार सकते हैं, वही मैच घुमा सकते हैं पूरा, मतलब एक ओवर में घुमा सकते हैं. एक ओवर में हार्दिक, मतलब कंपेयर नहीं करूंगा, दोनों अलग अलग है, बट एक ओवर में घुमा सकते हैं भाई साहब. चेतन भाई, I guess you have बॉलिंग तो बहुत काम करना है. बॉलिंग मुझे तो लगता है बॉलिंग में इंटरेस्ट भी नहीं है उनको यार. या तो वो रजत भाटिया से थोड़ा लेसन ले ले, इधर उधर मिलिट्री मीडियम सारे तो ज्यादा इफेक्टिव है. सीएसके भी एज अ बॉलर तो यूज कर नहीं रही है इनको, वहां पे भी रोल क्लैरिटी आ गई है कि जाना है और हिट करना है, आई गेस. ओके चेतन भाई, कमिंग टू द अदर बैटर्स नाउ. विराट कोहली का एक आज इंटेंट दिखा, आई गेस दिस वाज द मैसेज दैट नीडेड टू बी गिवन टू हिम, फ्री फ्लो खेलने का. नहीं, he was batting in power play. अगर power play में भी 16 बॉल्स पे 29 नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? मुझे कोई इंटेंट नहीं दिखा. इंटेंट तो रोहित शर्मा का भी था, पहली बॉल पे मारने की कोशिश की, वो भी इंटेंट है. तो इट इज अ बैटिंग ब्यूटी ऑफ अ पिच. 16 बॉल पे 29 रन पावर प्ले में, where you can pick the gaps, smash fours. I didn't see anything different from Virat Kohli. That was the least that I expected from Virat Kohli. That was the least I expected from Rohit Sharma. That was an absolutely horrendous shot that he played, premeditated. But at least वो ये तो नहीं सोच रहे कि मैं 10 बॉल पे 20 बनाऊं, 10 बॉल पे 15 बनाऊं, because he got out on a duck. That's the only praise that I'm going to give Rohit Sharma, because that was a very, very bad shot. But at least he's not concerned about कि पिछले मैच में डक बनाया तो इस मैच में कुछ रन बना लेता हूँ. He's too big a player. He's playing with a free mind कि मुझे ऐसे ही खेलना है. But yeah, that was a really bad shot. Really bad shot. पहली बॉल पे नहीं यार. Virat Kohli, yeah, he played well, timed the ball well. That's what he can do when he bats in the power play, which is why I want him to open. But again, yeah, I'm not going to read too much into what Virat Kohli did. I mean, intent, जिसको intent दिख रहा है अच्छी बात है, मुझे कोई intent नहीं दिखा. That's the minimum. You're batting in a power play, आप 180 पे strike नहीं करोगे on इंदौर की pitch, तो क्या मतलब, what are we talking about? Yeah. ताउस भाई, what do you have to say? इंटेंट नहीं था या ये लीस्ट एक्सपेक्टेड था? यार चेतन एकदम ही सही कह रहे हो. मतलब पावर प्ले, बैटिंग विकेट, अच्छी कंडीशन, और वो भी अफगानिस्तान सामने, और नवीन उल हक, आपको तो और बड़ा स्कोर करना चाहिए था. I mean, नहीं, I mean, let's not be harsh. I mean, he did look good. There's no doubt about it. But let's not read too much into it. It's 29 of 16. It's bare minimum. Power play में batting करते हो, it's a bare minimum. Absolutely. He would have liked to score much more runs. Yeah, obviously. Every opportunity which goes away. I mean, yeah, bat थोड़ा turn हो गया, नहीं तो that would have gone for a 4 or something. Yeah.
Okay, coming to the सर, आपको लगता नहीं टाइम जा रहा है धीरे धीरे? देखिए रोहित शर्मा बैक टू बैक डक्स, Yeah, that was disappointing. I guess Rohit वक्त जा रहा है, करीब आ रहा है T20 वर्ल्ड कप का समय, करीब आ रहा है, आईपीएल आ रहा है, आईपीएल में पता नहीं फॉर्म कैसा रहेगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इंग्लैंड सीरीज में कब जाएंगे, वो बड़ा मसला है। You know what? I would still not take Virat Kohli and Rohit Sharma both to the T20 World Cup. I would rather take a Shivam Dube. You know, I don't know. I have nothing against Rohit Sharma or Virat Kohli playing the T20 World Cup. I just want a baggage-free attacking team to play. कि देखते हैं ना क्या होता है, देखते हैं क्या होता है. So I would rather take total freshers. No KL Rahul, no Virat Kohli, no Rohit Sharma. Total freshers. Except Hardik Pandya, I don't want to take, and Jasprit Bumrah, I don't want to take anybody else. I just want a completely fresh-looking team going to the West Indies. I agree to that because अगर आप शिवम दुबे को भी देखें, रिंकू सिंह को भी देखें, वो एक रिफ्लेक्शन है कि कहीं ना कहीं वो बैगेज फ्री है. ठीक है, जितेश भी आज मारते भी आउट, बट अगेन ठीक है. Look at रिंकू सिंह, वो आपको बैगेज फ्री चीज सिर्फ रिंकू सिंह में ही अकेले दिखाई दे जाती है. But anyway, that's beyond the point. Yeah. तो आप साइन करा के ले लो कि आप गारंटी दोगे कि T20 वर्ल्ड कप जिता के दोगे, तो आप चलो. स्पोर्ट्स गारंटी के साथ तो नहीं आ सकता ना ताउस भाई. अब ऐसा तो ये तो बहुत. चलिए, कमिंग टू द बॉलिंग बिट बिफोर वी मूव ऑन टू द कमेंट्स. जेमी, अक्षर पटेल 4 ओवर 17 रन 2 विकेट. you really, you have been a fan of Axar Patel, right? If I'm not mistaken. And you... Absolutely. I am the only one who keeps on supporting Akshar Patel when we do these shows. The guy is brilliant when it comes to India, but unfortunately, just like many people were commenting about the last match, जब बिश्नोई 3 में 35 गए, common cricket watcher, I really, with each passing day, I have no time for these people. Akshar Patel के आप stats देखो, he's got brilliant stats at home. I would play him in every match. He's leagues ahead of Jadeja. Okay, someone raised, he's got a great arm, Jadeja. Okay, but he's 35. Akshar Patel is a street smart, bloody brilliant cricketer in Indian/Asian conditions. And anyone who again starts to say, isko mat khilao, I will go back to these scorecards. Is he going to work in Australia? No. Is he going to work in South Africa? No. But in these conditions, the guy is brilliant. Power play mein aate hi usne wicket liya. I mean, one of the best white ball players going around in India right now. Yeah. Okay. Sportsman is echoing what you're saying, Jamie. Axar is unfortunate to lose spot to Jadeja in the end. Yeah, absolutely true. Taus bhai, what do you make of this bowling performance? एक player 4 just over 4 economy rate, बाकी सबका 10, 8, 12, 10. I mean, थोड़ा तो reasonable. This guy deserves to be praised, Akshar Patel, for being so economical on this wicket when everybody was being hit. क्या इससे ज्यादा क्या चाहिए? अरे मुकेश कुमार 2 was 21. I mean, Akshar, see, you may not ask him to, deliver 5 overs or those 10 wickets in test matches, maybe where the ball is turning, but this guy is accurate when it comes to T20 cricket. जो होना चाहिए, accuracy, line on stump to stump wicket, pitching is perfect. Yeah, this guy, apart from being a good batter, he comes handy with the ball. विकेट भी दिलाता है बंदा, क्योंकि आप यहाँ पर इसके सामने गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बॉल विकेट पे स्टंप टू स्टंप रखता है. एक गलती या तो एलबीडब्ल्यू या तो डिस्मिसल बॉल. And that is the best point. And I would any day prefer Axar because of his batting. And then he adds, I mean, Jadeja fielder अच्छे, bowling off late की बात करो, off late batting भी चली गई, off late दिख रही नहीं है. Axar is a much better guy to go after. जब अगर वेस्ट इंडीज में आपको टर्निंग ट्रैक्स मिल रहा है, स्लो ट्रैक्स मिल रहा है, या फ्लैट भी मिल रहा है, तो ये बंदा बहुत ज्यादा काम आएगा यार आपके. Axar is out and out. I mean, they should not think unless वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहे हैं, वो 5, 10, 15 रन बचाने के लिए कि यार रविंद्र जडेजा फील्डिंग में बचा लेगी, बट यार ये आपको 10, 15 रन ऐड करके देगा, और ये बंदा 2 डिसमिसल तो करेगा या 1 करेगा, यानी -50 या -20, -30 करके दे देगा. आप वो हिसाब से ऐड करो ना यार. बट देन अभी अर्शदीप 3 overs 32 रन अलग है यार. सो इट्स बीन लाइक इनकंसिस्टेंट बॉलिंग. इकोनॉमिकल कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, कुछ ज्यादा इकोनॉमिकल है, और देन फाइन बॉलिंग, क्योंकि इंदौर में खेल रहे हैं, और क्या एक्सपेक्ट करोगे, छोटी बाउंड्रीज है.
ओके चेतन भाई, छोटी बाउंड्री से आप रन खा सकते हो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगेन वी आर बैक टू द सेम डिस्कशन जो हमने प्री मैच में भी किया था। अर्शदीप के एक्स्ट्राज आज 7 वाइड गिरे, उसमें से 3 वाइड अर्शदीप ने अकेले ने डाले, बाकी सबका एक एक था। सो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। आप व्हाट डू यू हैव टू से? Look, I think Arshdeep को वो लोग रोल दे रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं. Initially he bowled and then he was brought back in the death overs. तो वो रोल वो डिफाइन कर रहे हैं कि आप शुरू में पावर प्ले में कुछ बॉलिंग कराओ, देन मिडिल में मत कराओ और सीधा वापस आओ डेथ में. एंड इट्स नेवर इजी, इट्स चैलेंजिंग बिकॉज आप दो डिफरेंट टाइप की बॉलिंग कर रहे हो. बट लुक, डिसिप्लिन हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर अर्शदीप. आई वांट टू सी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वेंट फॉर 32 रन्स और ही वेंट फॉर 40 रन्स और वेंट फॉर 50 रन्स. मुझे इससे फर्क पड़ता है कि किस तरीके से वो रन खाए हैं. अगर आप डेथ ओवर्स में एक्स्ट्रास डाल रहे हो, that's just not acceptable, अगर आप even if you're going at 8 an over, आप लास्ट के 2 ओवर में एक्स्ट्रास नहीं डाल सकते. तो दैट आप बुमराह को देख लो ना, कब देखा है आपने बुमराह को एक्स्ट्रास डालते हुए? he might not pick too many wickets at the death or he might be a bit more expensive. ऐसा नहीं है कि वो हर स्पेल में he picks up 5 wickets and doesn't go for runs. बुमराह भी कभी-कभी मार खा लेते हैं. It's just a matter of what day, कैसा आपका दिन जा रहा है. बट किस तरीके की बॉलिंग कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. मुझे वो इम्प्रूवमेंट देखनी है अर्शदीप से. आई थिंक दिस कमिंग आईपीएल सीजन माइट बी अ वेरी डिफिनिटिव सीजन फॉर अर्शदीप. अगर वो चीज इम्प्रूवमेंट हमें दिखती है उनके क्रिकेट में, आई थिंक ही विल मेक दैट स्टेप अप. क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट ने दिखाया है कि ही इज नॉट मेकिंग दैट स्टेप अप. अगर वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती है तो देन ही विल कंटिन्यू टू बी दिस अर्शदीप फॉरएवर. He is not challenging himself, he's not self improving. He's happy with what he has, so then he will be Arshdeep forever. He will not take this current Arshdeep, he's not going to take that step up, which is going to be a bit disappointing. Because he has everything. He can move the ball, he's a left arm pacer, and pacer matlab pacer, proper pacer. He can bowl at the death. I mean it's a matter of taking that development step. I think I would have loved for him to spend time with Bharat Arun. I think that would have been brilliant. But I was just going to say that. Well done. And it's, I think, a bit disappointing that Bharat Arun is not. I mean, obviously, how long will Bharat Arun continue to take care of pacers for India? But yeah, Bharat Arun did a very good job with the last bunch of pacers, and any young pacer coming up should give a call to Bharat Arun and just go spend some time with him. Have a nice session where Bharat Arun is watching you. Just pick his brains कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि भरत अरुण के सामने अर्शदीप ने बॉलिंग नहीं किया हुआ है, किया हुआ है, बट शायद उतना नहीं, उस लेवल पे नहीं. Not every day in day out discussing your finer points. So if I am Arshdeep Singh, I would arrange a net session and call Bharat Arun कि बॉस आप आके मुझे देखो और आप मुझे बताओ. Okay. In fact, I would prefer Zahir Khan to come and chip in, advise Arshdeep Singh. Sure, yeah, of course. I mean, Zahir was brilliant as well, no doubt. I mean, basically, see, Taus, ये सारी चीजें self improvement से आती हैं. कि आप what I'm trying to say is कि ये सारी चीजें हैं, चाहे आप भरत अरुण से बात करो, चाहे बात करने के लिए बहुत लोग हैं, इम्प्रूवमेंट में आपकी हेल्प करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं आती है. वो द पॉइंट इज हेयर कि आप इस लेवल से इम्प्रूव होके इस लेवल पे जाना चाहते हो या नहीं, और यू आर हैप्पी विद दिस करंट लेवल. आई थिंक अर्शदीप इज हैप्पी विद दिस करंट लेवल. दैट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन. आई वांट टू सी मोर फ्रॉम हिम, सो लेट्स सी. एंड पर्सनली आई जस्ट फील अगर एक लेफ्ट आर्म पेसर और आ जाता है कोई तगड़ा, तो इट्स गोइंग टू बी अ कंपटीशन, शायद वो पोजीशन हिल सकती है अर्शदीप की. दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन. Okay, going to the comments now. Jimmy, Ujjwal Maurya is saying Rohit is a natural stroke player. Desperation to succeed is killing his game. I think he got over 500 runs in the World Cup, so I don't know where that comment is coming from. But okay. थोड़ा सा टिप्पणी तो दीजिए. I mean, look. Okay, you want to be harsh? I've been anti Rohit Sharma's return, and I can say, oh, he's got 2 ducks.
One duck was Shubman Gill's fault, and one was a shot that he's not played for years. So I'll still say there was intent in that shot. So I'll take that. So I mean, आजकल के टाइम पे रोहित के खिलाफ कुछ बोलना बेवकूफ लोग ही करेंगे. Sorry to say that. बट अजय भी जस्ट एडिंग टू दैट, ठीक है, ये वाला शॉट अगर 5-6 बॉल या 10 बॉल खेलने के बाद आए तो ये ज्यादा कैपिटलाइज कर सकते हो आप. डू यू फील दैट? Again, it's Afghanistan in a meaningless series. In a series you're going to win 3-0 on a flat track. I'll tell you, you don't need to be scoring 50s in T20 World. If 5 batsmen get you 30 runs at a strike rate of 200, throw in the extras, throw in a cameo, you've got a match-winning total. So, okay, the shot, Chetan was right. The shot was horrible, but I'm okay with it because this series is not going to impact his selection. It's not going to impact anyone's life. He thought the ball was going to be hit. I'm okay. Better than KL Rahul facing a maiden in a T20 World Cup. No, I'll take this. That was the most intent I've seen. I understand Chetan's point, but Virat Kohli didn't have to do what he did today. He chose to do it. He could have. I've seen him leave balls in T20s also. He could have tapped. First ball, nahi bhaiya, main marunga. So I'm actually okay for once with the way that Rohit and Virat batted in a T20. Yeah. Okay. No, I'm okay as well. Okay. Yeah, I know. Okay as well. I still won't take them. I mean, I want. Bilkul. And this. No. All I'm saying is, he didn't have to do this. He's very capable. मैं नहीं करूँगा ये. So at least he tried something different. I like that. I did not see him doing that. I saw some dabs to third man. I saw a flick for 2. I saw shots he doesn't play. They were ugly shots. Ugly khelo. Intent. I actually saw intent in Virat Kohli's international T20I batting, and I liked it. Yeah. But yeah, you know what? I want to see this same intent after 6 overs. हाँ बिल्कुल absolutely. Bilkul. But I've seen him bat weird. Yeah. I found it to be desperate because I mean that ball could have been either flicked off the pads to ये या तो middle था तो he could have, but then intent भी है, desperation भी है, दोनों mix, तो वो caution आपको नहीं देखेगा, तो आपको ऐसे देखने ही मिलेगा. It's the second word you used. The pressure is there. There are youngsters doing things. This was desperation, and it can be a good thing. Desperation for someone at 35 with all the records to his name, it can be a very good thing. So I'm actually very happy that he was desperate, Aj. Okay. Tausbhai, next comment is for you. Ravi Singh is saying Virat has been India's best player for a decade, but he gets the most criticism. And if Rohit starts would have been of Virat, then think criticism he would have faced, leave aside the finishing ability. So probably इन्होंने ये सवाल इसलिए करा है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोला कि यशस्वी को बैठाओगे या विराट को बैठाओगे. नहीं, वो कमेंट किसने किया था वो शुरुआत में कि भाई किसको ड्रॉप करना चाहिए, कोई व्यूअर ने कमेंट किया था कि यार विराट को ड्रॉप करना चाहिए या यशस्वी को, तो यशस्वी को. मैंने तो खाली उसमें आगे बोला कि भाई अब आप डिसाइड करो इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं कि विराट को, अभी विराट खेलेंगे तो थोड़ी उनको ड्रॉप कर सकते हैं आप 11-15 में रख के. वो विराट कोहली, अपार्ट फ्रॉम दैट, आई मीन यू नीड अ बिग हार्ट and a huge reputation as a captain to drop somebody like, I mean, Hardik Pandya won't come and dare कि भाई विराट आप बैठ जाओ. मुझे लगता नहीं अगर वो कप्तान है, रोहित भी डेयर नहीं कर पाएंगे, राहुल द्रविड़ बोल भी नहीं पाएंगे. तो यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं कि भाई ड्रॉप कर दो, भाई ऐसा नहीं होता. थिंग इज दैट कि विराट स्टार्ट अच्छा था, पावर प्ले में अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया, इनिशिएट किया, और वो करते रहेंगे यार. इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट ही इज स्कोरिंग रन्स. आई मीन ही हैज टू डू दैट, इट्स हिज जॉब. अलग अलग रोल है यहाँ पर. तो विराट कुड हैव कैरीड ऑन, और इससे डिफाइन नहीं हुआ कि यार भाई वो ड्रॉप हो जाएंगे. उन्होंने स्टार्ट अच्छा दिया, मजा आया, मगर ही कुड कंटिन्यूड लॉन्गर, और वो खेलते रहेंगे यार, उनको ड्रॉप कोई नहीं कर सकता. बट देन ही हैज टू चूज एग्जैक्टली हिज माइंडसेट की हाउ ही हैज टू प्ले, वेदर पावर प्ले और वेदर आउट ऑफ पावर प्ले. वंस पावर प्ले इज डन, एग्जैक्टली वो इंटेंट गिराना नहीं चाहिए. वो आपको यंगस्टर को मैचअप करना है, आपको यशस्वी जायसवाल के साथ मैचअप करना है, नहीं तो आपके रेपुटेशन पे सवाल खड़े हो जाएंगे. आप T20 क्रिकेट में सारे बल्लेबाज एक लेवल पे होते हैं, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता. I think what is important for Virat is, हमने फैफ के बारे में थोड़ी सी बात की थी टॉस टाइम पे. I think
it's important for Virat क्योंकि अगर आप देखो ना RCB के लिए कैसे खेलते हैं कि Virat and Faf open and then they do the power play and then Virat slows down a bit, you know, against spinners वैसे भी power play के बाद and he tries to anchor. However, Faf का strike rate goes up after the power play Yes. Yeah. on most occasions. So Faf takes that striking role and Virat bats long. I want to see a reversal of that this IPL. वो होगा या नहीं होगा, that is anybody's guess. But that's what I want to see because that is what is going to be important for India. Faf is not playing for South Africa, is it? So, yeah, that is something that from Virat Kohli I want to see in line with this. क्योंकि अब अगले मैच में पावर प्ले के बाद उन्होंने वैसे ही खेल लिया, but sample size बहुत छोटा है. IPL में you have 14 matches to see. ठीक है, टीम पहले ही सेलेक्ट हो जाएगी, but Virat Kohli is going to the World Cup. There is no doubt about it, right? But I want to see the mentality with which he bats throughout those 14 matches. If this is the way he's going to bat going ahead, great. But not only in the power plays, also outside the power plays. And I think the way he bats for RCB is going to define a lot of things going ahead. क्योंकि आप एक mindset के साथ जाओगे, आप mindset April May का mindset आप जून में change नहीं कर लोगे. Yes, exactly. You know, it's very tough to do that. Okay, I have a question from sports fan Chetan bhai. If Jaiswal cements his spot as first choice opener, would you keep Gill in World Cup squad as well with Virat Kohli already in? Yeah, you need backup batsman. एक backup opener तो चाहिए और शुभमन गिल 3 पे भी कर सकते हैं. So you know you can play around with permutations. World Cup का squad obviously वो obviously depend करेगा कि आप किस तरीके की combination बना रहे हो. क्या आप देखो शुभमन गिल एक तो देखो आईपीएल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी आईपीएल फॉर्म की, बट देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको 3 ओपनर लेके जाने हैं और नंबर 3 बैट्समैन लेके जाना है. आप ये देखोगे कि हु आर योर प्लेयर्स हु कैन ओपन एंड बैट एट नंबर 3, यू नो, एंड देन आपको देखना है कि आप कितने ऑलराउंडर्स लेके जा रहे हो, कितने पेसर्स लेके जा रहे हो, कितने स्पिनर्स लेके जा रहे हो. तो अगर यूजुअली एक एक्स्ट्रा बैटर जाता है तो क्या वो एक एक्स्ट्रा बैटर ओपनर नंबर 3 वाला जा रहा है या 4-5 वाला जा रहा है या 6-7 वाला जा रहा है. 6-7 में वैसे भी आप ऑलराउंडर लेके जाओगे. सो यू पिक योर 11 एंड देन द 4 स्पॉट्स यू जस्ट वांट टू सी कि आप किस तरीके से लेके जा रहे हो. लेट्स नॉट फॉरगेट यूएसए में जो वो ड्रॉप इन पिचेस में जो होने वाला है, यू don't know, nobody knows. India is playing 3 matches, obviously they are playing एक पाकिस्तान के अगेंस्ट and then the minnows, but still आप पाकिस्तान वाला गेम भी तो जीतना चाहोगे ना. You don't want to lose to Pakistan. That's a huge game. So, okay, lastly Jimmy, I would like to ask you this, you know, because हम लोग कहीं ना शायद सूर्य कुमार यादव की बात नहीं कर रहे इस सबके अंदर. He is opened, he is played at number 3 when Virat has he can play in the middle order. तो वो भी एक फैक्टर इन तो करना पड़ेगा. When you talk about Gill and Jaiswal and Rohit and Virat, वो 2-3 स्पॉट के. What do you have to say? क्या You mean yeah, go ahead. will Shubman Gill be dropped because they'll open with Sky? I don't get the what. So you know if Sky is also there because you'll have to play Sky in that 11. Okay, ठीक है. Correct. Sky is the first name on that 11. Yeah, first name on that 11, of course. So if you also have a Sky who can also open, who can play at 3 probably, and you have a Jaiswal, तो आप गिल को ले जाना चाहोगे अगर उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है आईपीएल के. If they're thinking of Sky the opener, then I mean we can just shut the show down right now. Yeah, Sky is an opener. कब भाई कब कहाँ? Why would Sky open? No. Sky is. No, but Chetan, to me, Sky is 100% at 3 or 4 because he's got hundreds from both spots. Opening ki baat, why would you open with Sky? He's the best player in the world batting at 4. So the only way that Gill goes out is if Dube again smashes 60 not out in the third match, smashes 350 runs in the first month of the IPL, then his batting becomes irrepressible. You have to take him. Then you can talk about Gill. But right now, Chetna is right. Gill can open, Gill can bat 3. So right now, in my book, he's going. But no other name could come. It just depends. Dekho, Sky is the first name. When I say Sky is the first name, I am assuming ki you're opening with Rohit, Jaiswal, and then Virat at 3. Yeah. Sky automatically slots in at number 4. You put
was best batter in T20, आप उसको पहले लिखोगे and then you put in the rest of the names. और रोहित और विराट आ जाएंगे, बुमराह आ जाएगा, and then you put in the rest of the names. The issue here is कि श्रेयस भी हैं, शुभमन भी हैं, दुबे भी हैं. अब दुबे का जो सवाल है, if I can just add, I will not even think of Dube the bowler. मैं तो सोचूंगा ही नहीं कि मैं दुबे को बॉलर की तरह खिलाना, मैं तो दुबे को बैटर की तरह खिला रहा हूं. Can Dube the batter find a spot? If he can find a spot, then you have to question कि आप गिल को लेके जा रहे हो, अय्यर को लेके जा रहे हो, किसको लेके जा रहे हो? लेकिन फिर आपको कीपर भी तो चाहिए बीच में. अरे तो दुबे तो 4 पे ही बैटिंग कर रहा है, दुबे नीचे थोड़े जा रहा है. कीपर है ना आपके पास, ये क्या कहते हैं, जितेश है, so you have a keeper there. उसमें क्या है? And Ishan Kishan will make a comeback by the T20 World Cup. ये आप लिख के ले लो, ठीक है? So the point of the matter is, आप मतलब ईशान किशन का एक half of the IPL goes good, you'll not be able to ignore him because he's a wicket keeper batter who can bat in the top 4 and he's a backup wicket keeper. तो you have 3-in-1 जैसा ODI वर्ल्ड कप में था, आपको फिर से 3-in-1 मिल रहा है. और 3-in-1 आपको कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. संजू सैमसन doesn't bat lower than number 3 or 4, तो वो है ही नहीं आपके पास ऑप्शन. So it's Jitesh and Ishan Kishan. और कौन है तीसरा विकेट कीपर आपके पास? So the fact of the matter is, दुबे क्या करते हैं, लेकिन क्या सिलेक्टर्स दुबे को सिर्फ बैटर की तरह देख रहे हैं या वो हार्दिक का बैकअप देख रहे हैं? अगर वो हार्दिक का बैकअप देख रहे हैं तो दुबे इज नॉट गोइंग. तो जस्ट अ मैटर ऑफ कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं. बट अगेन वो बहुत जिगरे वाला डिसीजन होने वाला है, बहुत जिगरे. आप शुभमन गिल को छोड़ के शिवम दुबे को ले जाओगे ना, उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए, है नहीं हमारे सिलेक्टर्स के पास. ओके, लास्टली ताउजा, यू हैड टू से समथिंग. I want to add over here. देखिए, आप बैकअप की बात कर रहे हैं, शुभमन गिल, आई एम स्कैर्ड फॉर. Yeah, I guess there's some network issue with Tauzbek. Tauzbek, can you hear us? Yeah. I'm scared for Shubman Gill. I mean, his form, the way he's batting, whether it's like over the time was, अगर आप टेस्ट क्रिकेट में या ओवर द टाइम आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो साइकोलॉजिकली अफेक्ट करने लगता है, which is what I'm seeing right now. I'm scared for him. तो आपके पास ये ऑप्शन है भाई, आपके पास बैकअप ओपनर ऑप्शन की बात करो, बैकअप ओपनर की, आपके पास विराट कोहली भी बैकअप ओपनर है. तो आप छोड़ो शुभमन गिल को, अगर वो थोड़ा भी डाउन लग रहे हैं या आईपीएल में परफॉर्म नहीं कर रहे या थोड़ा भी कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो भाई हैवी हार्ट के साथ बोलो शुभमन, तो ये बंदों को चांस मिलेगा, आपको फ्यूचर में मिलेगा. ये विराट और बैकअप है ओपनर अपने पास, अगर ओपन कराना है जरूरत पड़ेगी, वैसे नहीं होगी क्योंकि रोहित एंड जायसवाल इज एनफ. बट देन यू कैन ऐड मोर फायर पावर इन द मिडिल ऑर्डर. सूर्या, शिवम दुबे एज अ बैटर, यू हैव ईशान किशन, यू हैव श्रेयस अय्यर. तो आपको मतलब श्रेयस अय्यर is going to have a big IPL this time. There's a point to prove there. और जब शुभमन गिल कैप्टन बने थे गुजरात टाइटंस के, आप जाके वो एपिसोड देखिए, मैंने कहा था this is not a good move from a personal point of view for Shubman Gill. Yeah. Because there's a T20 World Cup coming. There are a lot of names. If Rohit and Virat come back, then Shubman Gill is going to be busy captaining the side. And who knows, his form suffers because of that. And the moment your form suffers, out. Your options, too many options. Yeah. आपको 15 बनाना है, बहुत खिचड़ी बनने वाली है. Yeah. चलिए, अभी के लिए तो गुड न्यूज़ है कि को जो हम करवाना चाहते थे वो कर रहे हैं. जायसवाल हो, शिवम दुबे हो, रिंकू सिंह हो, बॉलर्स भी हो, ठीक है. थोड़ी सी पिच खराब थी, बॉलर फ्रेंडली नहीं थी, रन्स खा गए, लेकिन इट्स बीन अ गुड. मुझे डर लग रहा है, मुझे एक ही डर लग रहा है यार, वो कंक्लूजन पे ना आ जाए सिलेक्टर भाई बोले दुबे को आगे ले लो और रिंकू को पीछे कर दो. वो मुझे एक डर लग रहा है, इन लोगों का भरोसा नहीं है यार, वो नहीं होना चाहिए यार, अनफेयर हो जाएगा. ये सब मुझे 2-3 अच्छे नॉक आ गए, ये सब डिस्कस भी नहीं करना है बीपी बढ़ाने के लिए. करना ही नहीं है. चलिए, द सीरीज इज आवर्स. द सीरीज सील हो चुकी है 2-0 के लिए. एंड मजा आया ये मैचेस देख के. होपफुली T20 वर्ल्ड कप में भी ये रेप्लिकेट होता रहे, as we have been talking about. Well, gentlemen, thank you for joining this live session. Lovely chatting with you as always. Bye bye. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.